Namaskar. Myself Dr. Lavkush Dwivedi, the Faculty of Immunology at Department of Biomedical Sciences, Bundelkhand University, Jhansi. Today we will discuss about the immune self tolerance. Let us move to the topic, please. So, what is the immunology? As you all know that like others human physiological system, we have one more system that is called immune system, which is providing a defense from the invading antigens to our body. But question is this, that why this immune system is not normally acting against our self cells, because our immune system is self tolerant. So, what are those mechanisms which are ensuring that our immune system should not give response for the self antigens, or it should not be self reactive? It should only be non self reactive and self resistant. So, there are some mechanisms through which it is ensured by the body that immune system which we are having in our body should be self tolerant, and there are some cells, there are some mechanisms which are regulating the immune imbalances like autoimmunity and immunodeficiency. So, let us discuss how it happened. We know there are two types of immune system, as we all know. One which we receive by birth, that is called innate immune system, that is a general kind of immune system, and it is not very specific for antigen to antigen, while other immune system is which we acquire during our lifetime, that is called acquired immune system or adaptive immune system. The difference is that this kind of immune system is very specific antigen to antigen. There are two types of immune systems, and in acquired immune system we have the mediators, that is lymphocyte like T lymphocyte, B lymphocytes, and these T and B lymphocytes, they are maturing in different organ, like B lymphocyte is maturing in the bone marrow and the T lymphocyte is maturing in the thymus. And because of the site of maturation that is different from lymphocyte to lymphocyte, they are behaving differently. So, at the site of maturation, it is basically ensured that the lymphocyte should be matured when they are not self reactive. Only non self reactive lymphocytes should be matured in the thymus in our bone marrow. So, primarily our body, our immune system ensure it in the thymus, in the bone marrow itself, in the central lymphoid organs, you can say. And if suppose some of the lymphocytes, if they are showing some response against the self cells, then how are they controlled, how are they treated, and actually what happened with those cells, that we will discuss today in our presentation. Normally, if you see that whenever we are having infection of any antigen, our T cells are getting activated, and in normal condition our body give response, our immune system give response against the pathogen, and sometime when some inflammatory responses are there, are some persons, if they are suffering from the inflammatory diseases, maybe that our immune system is giving response against self cell also. Normally it happen, but if suppose there are some tolerant regulatory T cells which are involved, then these tolerant regulatory cells, they will control the activation of these T effector T cells, and they will ensure that only adequate number of T cells should be activated. That is why no response or reaction should be occur against the self cells. So, what these tolerant regulatory T cells are doing? They are ensuring that our immune system should give controlled response to the pathogens, only adequate response is given against the pathogen, and there is no response to the self. So, in nutshell, if you say that there are two types of cells in every time when our body is giving the immune response, there are two types of cells which are involved. One
which are getting activated against the pathogen or trying to give the response against the pathogen, and another is which are ensuring that this activation should not be more than requirement. These are the regulatory T cells. So, these are the regulatory T cells which are normally ensuring that our body should not be affected by our immune system or by our immune response. Now, as I told you that how we are ensuring that only a non-self reactive T lymphocyte should be matured. So, that ensuring is at the two level, that is central as well as the peripheral tolerance to self cell. I told you that in central the primary generative lymphoid organ, that is your thymus and bone marrow, where these lymphocytes are getting matured. At that level itself, suppose you see like from the lymphoid precursor, the lymphocytes are getting mature. At the immature maturity level of this lymphocyte, if these lymphocytes are identified that they are giving response against the self antigen, then these lymphocytes are not generally allowed to be matured and sent to the blood circulation. Now, what happen? Normally you see that if they are getting mature or they are having the reaction for the self cells, maybe that they are deleted, they are not allowed to be matured, or maybe that their receptors are got edited, because these are the receptors through which these cells will identify to the self cell as an antigen. So, if we edit the receptor, so these cells now will not be self reactive. So, we can change the reactivity of the cells if we change the receptors of these cells. So, when we are doing is this is called the receptor editing process. So, we can go for the deletion also, or we can cause the receptor editing also, or the third thing what we can do is, suppose there are some cells which are self reactive, we can convert those cells as regulatory T cells. Means now they will not directly act against the antigen, rather they will control or regulate the action of T helper cells or T cytotoxic cells when these cells are giving response to the antigens. Like in first slide I told you that there are few cells which are ensuring that a regulated or controlled immune response should be given against the antigen every time. So, at central level itself it is being ensured that any of that cell which is self reactive should not be matured. Now, if suppose by anyhow these cells are transferred from the central level to the peripheral level, if they are already circulated in the blood. Now, here also we have one more chance that we can convert these cells into the regulatory T cells, or we can suppress their actions, or we can cause the deletion of such kind of cells which are self reactive. Here also you can see like there may be some energy process, there may be apoptosis also, we can delete such cells which are having the reactivity for the antigen, self antigen, and the third one is that we can cause the suppression of such cells, so that the cell they cannot give the reaction against the self antigens. So, these are the process through which we can ensure the only those kind of lymphocytes are getting matured which are non self reactive, not a self reactive. That is the major characteristic of immune system. Now, what are the consequences of self antigen recognition in thymus? Now, as I told you that there are two main organs which are known as the primary or central lymphoid organ, like thymus is for the T cells and the bone marrow is for the B cell. In thymus, there are two processes through which we are ensuring that only those cells should be matured which are non self reactive. There is a negative selection process, means in thymus we are expressing the tissue specific or tissue restricted antigens, and the cells lymphocytes which are still immature, if they are exposed by such kind of antigens which are found in our peripheral tissues, and if these lymphocytes are showing reactions against these kind of antigens,
So now these lymphocytes are not allowed to be matured and they are caused deleted. So this is called negative selection. जब हमने इनको पहचान लिया कि ये ऐसी सेल्स हैं जो हमारे अपनी बॉडी की सेल के अगेंस्ट ही अपना रिएक्शन दे सकती हैं, जिससे कि हमको हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमने इन सेल्स को मैच्योर नहीं होने दिया और इन सेल्स को डिलीट कर दिया गया, इनको मार दिया गया. व्हाट अनदर स्टेप्स वी कैन फॉलो, जब हमने इनको एक्सपोज कराया इन लिम्फोसाइट्स को और जब हमने पहचान लिया कि दे आर showing the reactivity for the self antigen, at that level we can convert these cells as a regulatory T cells. In last slide I already told you, regulatory T cells का मतलब ये है कि जहाँ पर ये सेल्स हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जिससे कि मोर देन रिक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो, हम हाइपर सेंसिटिविटी के कैटेगरी में ना आ जाएं. इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास या इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्यून करने के लिए हमारे पास टी रेगुलेटरी सेल्स का होना बहुत ज़रूरी है. और हम ये कर सकते हैं कि ये इमेच्योर्ड जो हमारी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं, थाइमस लेवल पे ही हम इनको ऐसी सेल्स में कन्वर्ट कर दें जो कि रेगुलेशन के काम करें, बल्कि डायरेक्ट एंटीजन के साथ एक्टिवेशन ना कॉज करें. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ वी आर इंश्योरिंग, कैसे हम ये इंश्योर करते हैं कि किस तरह के सेल्फ एंटीजन का एक्सपोजर हम थाइमस में इन सेल्स को कराएं. लेट मी टेल यू दैट द लिम्फोसाइट्स आर हैविंग a very good expression of recombinase enzyme, and the receptors which are responsible for the specificity of lymphocyte to lymphocyte, they are made up of combined expression of several genes, and these the alleles of the genes, they are randomly arranged every time when the lymphocyte is getting mature and the receptors are expressing on the surface. So generally we can say that जब भी कभी किसी भी lymphocyte का maturation हो रहा है, उसके surface पे पाए जाने वाले जो उसके receptors हैं, जिनके थ्रू के वो किसी एंटीजन को पहचानेगा, उन receptors के फॉर्मेशन में कई सारे जीन्स, उनके एलील्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उन एलील्स को आपस में रैंडम रिसफल कर दिया जाता है, जिससे कि हर बार एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है. और इसीलिए रिसेप्टर, लिम्फोसाइट टू लिम्फोसाइट रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी बदल जाती है. और इस रैंडम रिसफलिंग के दौरान कई सारे ऐसे लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं जो हमारे अपनी बॉडी की सेल के लिए भी अपना रिएक्शन शो कर सकते हैं. हमारी जिम्मेदारी सेंट्रल लेवल पे ये है कि ऐसे लिम्फोसाइट्स को जो कि सेल्फ रिएक्टिव हैं, उनको मैच्योर ही ना होने दिया जाए. और अगर हम उनको मैच्योर होने दे रहे हैं तो हम ये इंश्योर करें कि वो सेल्फ सेल के लिए अब रिएक्शन शो नहीं करेंगे, या तो हम उनको सप्रेस कर दें, या तो उनके रिसेप्टर में एडिटिंग कर दें, या हम उनको मार दें, या हम उनको रेगुलेटरी टी सेल्स के टाइप में कन्वर्ट कर दें. तो हम थाइमस में किस तरह के एंटीजन का एक्सप्रेशन इन मैच्योरिंग लिम्फोसाइट के साथ करते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं. हमारे थाइमस में एक स्पेशल मैकेनिज्म है जहाँ पर कि हम उनको सारे लिम्फोसाइट्स को पेरिफेरल टिश्यू एंटीजन के साथ एक्सपोज कराते हैं. और इस तरह हम इंश्योर करते हैं कि कौन सी वो लिम्फोसाइट्स हैं जिनमें रैंडम रिसफलिंग कर करके नए नए रिसेप्टर्स बन रहे हैं, उनमें से वो कौन सी लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारी अपने टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं. और ऐसे जो सेल्फ रिएक्टिव थाइमोसाइट्स होते हैं उनको जनरली मैच्योर होने नहीं दिया जाता. और ये संख्या बहुत ज़्यादा है. कई सारे ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं जो बनते तो हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिएक्टिविटी की वजह से उनको मैच्योर ही नहीं होने दिया जाता, उनको सेंट्रल लेवल पे ही मार दिया जाता है. देयर इज ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन ग्रुप. थाइमस में हमारे पास ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन ग्रुप्स हैं और वो जीन्स ये इंश्योर करते हैं कि जो ये हमने पेरिफेरल टिश्यू एंटीजन के एक्सप्रेशन की बात की, ये इन्हीं जीन्स के द्वारा काज हो रहा है. And they are ensuring that only non-self reactive should be mature. Self reactive cells should not mature.
But one thing we have to notice, because this is the autoimmune regulatory gene group which is ensuring that only non-self reactive cells should be mature. If due to any cause, due to the biological factors or physical factor or the chemical factor, if these autoimmune regulatory cells are getting fail, so that failure of this autoimmune regulatory gene, that may lead to the autoimmunity like polyendocrineopathy. Because इसके फेल होने के बाद जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होने दी जाएंगी, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और जब वो मैच्योर होकर के सर्कुलेशन में आएंगे तो हमारे ही अपनी सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट वो रिएक्शन कॉज करेंगे और ये ऑटो इम्यून रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल ग्रेव्स डिजीज़ है, जिसमें कई बार देखा जाता है कि हमारे अपने ही बॉडी में जनरेटेड हार्मोन्स के अगेंस्ट जो रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन गई, उनके वो ऑटो एंटीबॉडीज़ ने जाकर के रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया, और जिन हार्मोन्स के लिए वो रिसेप्टर्स थे, वो हार्मोन जब उन पे बाइंड करने के लिए आता है तो वो रिसेप्टर्स चूँकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं, उनको वो ओरिजिनल हार्मोन को बाइंड करने का स्पेस नहीं मिलता। सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाया, वो फेल हो गए। नाउ हाउ वी आर इंश्योरिंग द डिलीशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स इन थाइमस। यहाँ पर अगर हम देखें कि हम कैसे ये इंश्योर करते हैं थाइमस में कि हमारे जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स हैं उनको हम कैसे डिलीट करें। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे थाइमस में जो टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड एंटीजेंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होती है। यहाँ पर ऑटोइम्यून रेगुलेटरी जीन्स हैं, एंड दीज ऑटोइम्यून रेगुलेटरी जीन्स they are causing the expression of tissue restricted antigens. Now these tissue restricted antigens when they are expressed on the surface, जो भी lymphocytes mature हो रही हैं वो lymphocyte जब इसके साथ expose होती हैं तो वो देखते हैं कि ये इनके अगेंस्ट रिएक्शन कर रही हैं, इनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे रही हैं। तो जैसे ही वो रेस्पॉन्स देती हैं, इन सेल्स को मार दिया जाता है, उनका एपोप्टोसिस कर दिया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सिलेक्शन और डिलीशन प्रोसेस। इनको मैच्योर नहीं होने देता, ये जनरल ये नॉर्मल प्रोसीजर है हमारी बॉडी में। बट अगर ये प्रोसीजर जिसके थ्रू हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही नुकसान ना पहुंचाए, इसमें अगर जो मेन जीन्स हैं ऑटोइम्यून रेगुलेटरी जीन्स, अगर ये फेल हो जाएं, इनके फेलियर का कोई भी वजह हो सकती है, कोई वायरसेस हो सकते हैं इनको डिस्टर्ब कर दें, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स और अन्य बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर ये फेल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इनके फेल होने के बाद जो टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड एंटीजन का एक्सप्रेशन हो रहा था वो अब नहीं हो पाया, और अगर नहीं हो पाया तो जब लिम्फोसाइट मैच्योर हो रही है और उसको हम टेस्ट करते हैं बाय द एक्सप्रेशन ऑफ दीज TRAs, वो हम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे और ये लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर होकर के हमारे सर्कुलेशन में आ सकती हैं। और जब ये नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस फेल हो गया, सेल मैच्योर हो गई और वो पेरिफेरी में आई, तो जिन सेल्स के अगेंस्ट वो स्पेसिफिक थी, वो सेल्स के अगेंस्ट उन्होंने रिएक्शन कॉज कर दिया और हमारे बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी हो गई। तो इस स्लाइड के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से नॉर्मली हमारी बॉडी में इंश्योर किया जा रहा है कि सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होना चाहिए इन थाइमस। बट द फैक्टर्स व्हिच आर इंश्योरिंग दिस, इफ दे आर गेटिंग फेल ड्यू टू एनी रीजन, then this can be happen that even self reactive lymphocytes can be matured and then they can cause autoimmune effect in the peripheral areas. Now that was in central level. I told you that this kind of self tolerance we can ensure in the central as well as in the peripheral level. अगर ऐसा हमें महसूस होता है किसी भी स्टेप पे कि सेंट्रल लेवल में गलती से जिन लिम्फोसाइट्स को मैच्योर नहीं होने देना चाहिए था, जो कि सेल्फ रिएक्टिव हैं, लेकिन वो भी मैच्योर हो गई और वो हमारे पेरिफेरी में चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें उनको करेक्ट करने का कोई अवसर नहीं है, अब हमको ऑटो इम्यूनिटी होनी तय है, ऐसा नहीं है। हम पेरिफेरल लेवल में भी ले जा करके उनको करेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ समझते हैं।
नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मल टी सेल रिस्पॉन्स इस तरह से दे रहा है। हम जानते हैं कि टी सेल्स के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को इनगल्फ करके उसको पेप्टाइडल फॉर्म में कन्वर्ट करके एमएचसी के साथ सरफेस पे एक्सप्रेस करती है, और जब ये कॉम्प्लेक्स सरफेस पे एक्सप्रेस होता है, लाइक डेंड्राइटिक सेल इज वर्किंग हियर एज एपीसी, so when this combination is expressing on the surface, that specific T cell will identify to this combination, and then that T cell will be activated. This is the normal procedure. And one more thing you can see, like this is not only TCR or MHCR antigenic peptide complex which is interacting with each other, rather there is some co-stimulatory signal also, like CD28 is expressing on the T cells and B7 is expressing on the dendritic cell or APCs, and these two are also connecting together, and then only the T cell activation will takes place. So, normally this combination when it is expressed, then it is interacting with the specific T cells and the T cells are getting activated, effector and memory T cells are formed. But at peripheral level, what we can do if suppose we got some those kind of cells which are self reactive and they have been matured. Now, here we can do one thing, that is energy, suppression and deletion. तीन स्टेप्स हैं जिनके तहत हम पेरिफेरल लेवल में भी इसको ऑटो इम्यून इफेक्ट कॉज होने से रोक सकते हैं। एनर्जी का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने देखा जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स थे जिनके आपस में इंटरेक्शन के बाद ही टी सेल का एक्टिवेशन हो सकता है, उन को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो पूरी चीज़ें ज़रूरत की थी जिनके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते थे कि टी सेल एक्टिवेट हो, वो सारी चीज़ों का एक्सप्रेशन इस सरफेस पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन ही नहीं हुआ। मतलब ये मैच्योर तो हो गई, लेकिन हमने इसको इस तरह से एडिट कर दिया कि वो अपने आप को एक्टिवेट ही नहीं कर सकते। सो इट इज़ फंक्शनल बट अनरिस्पॉन्सिव। दूसरी ओर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम कुछ टी रेगुलेटरी सेल्स की मदद से ऐसी सेल्स को सप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देना चाहते, हम उसको एक्टिवेट नहीं होना चाहते, हम टी रेगुलेटरी सेल्स के माध्यम से इसके एक्टिवेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट इज वी कैन कॉज द डिलीशन ऑफ दीज सेल्स, हम इनका एपोप्टोसिस भी कॉज कर सकते हैं। सो ये हम पेरिफेरल लेवल में जाकर के कर सकते हैं, और ये पेरिफेरल लेवल पे संभव है। इसका मतलब ये है कि अगर सेंट्रल लेवल से हमारे हाथ से बात निकल जाती है किसी वजह से और हम वहाँ पर ऐसी लिम्फोसाइट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जो, और हमने उनको मैच्योर कर दिया जो सेल्फ रिएक्टिव हो सकती हैं, तो पेरिफेरल लेवल पे भी उनको एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, उनको एडिट किया जा सकता है, उन पे अपना नियंत्रण रखा जा सकता है। सो एट दीज टू लेवल्स we can cause the control of this. As I told you what is T cell energy, जहाँ पर कि हमारे जो CD28 हैं, इन CD28 के साथ जो B7 एक्सप्रेस करना चाहिए था, वो B7 का इंटरेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से सिग्नलिंग ब्लॉक हो गई और इस वजह से T सेल्स का एक्टिवेशन नहीं हुआ। दूसरी ओर हम ये भी कर सकते हैं कि इस CD28 के साथ हम कुछ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन कॉज करा दें, जिससे कि टी सेल्स का एक्सप्रेशन ही इनहिबिट हो गया, वो बाधित हो गया, और इस तरह से सेल्स मैच्योर तो हो गई थी लेकिन ये अनरेस्पॉन्सिव बनकर रह गई, इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो इन टुडेज लेक्चर वी जस्ट concluding that these are the two levels where we are ensuring that only non-self reactive T lymphocytes should be matured. Central level also and peripheral level also, and how we are ensuring it, that we have seen. And if suppose due to any reason if we are missing it in the central level, we can control in the peripheral level also, and this is the natural mechanism which we try to understand about this immune system. Thank you very much. Namaskar.